नमस्कार देवियों सज्जनों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल असिडियस आशीष में। फिर से हाजिर हूं, अंग्रेज़ी पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ करेंगे, समथिंग डिफरेंट। आज अल्फाज क्या हैं, उनके क्या मायने हैं, उससे थोड़ा सा हट के आज चर्चा करेंगे। विल बी डिस्कसिंग टुडे ऑन द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप अपने स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वी मस्ट नो वन थिंग, द सब्जेक्ट in the subject verb agreement, the verb in the English language, I'm talking about the verb of the English language, they are always dependent on the subject in number and person. The verb of the Hindi language, the verbs in the Hindi language, they can be dependent on the subject. Also, they can be dependent on the object. And sometimes it can happen that they are not dependent on either of them. जो हिंदी भाषा में क्रियाएं हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, वो सब्जेक्ट पे, कर्ता पे कभी उनका प्रभाव पड़ता है, कभी ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पड़ता है, और कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही नहीं पड़ता. इट बिकम्स इंडिपेंडेंट. बट दिस डजंट हैपन इन इंग्लिश. इन इंग्लिश लैंग्वेज the verbs are solely dependent on the subject of the sentence. The object plays no role on the verbs in English language. This is the major difference, the most important difference between the verbs of Hindi language and the verbs of English language. और दूसरा भी एक important difference है हिंदी लैंग्वेज के जो वर्ब्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ब्स हैं. हिंदी की जितनी क्रियाएं हैं उनका नंबर, मतलब वो वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल ज़रूर होते हैं. साथ में वो उनका जेंडर्स भी होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये क्रियाएं भी होती हैं. उनका नंबर के साथ साथ जेंडर भी होता है इन हिंदी. बट इन इंग्लिश नंबर्स आर देयर, वर्ब्स के नंबर होते हैं, दे कैन बी सिंगुलर, दे कैन बी प्लूरल, बट दे डोंट हैव द जेंडर्स. वहाँ मैस्कुलिन, फेमिनिन इंग्लिश में वर्ब्स के नहीं होते हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे. तो अब आप देख रहे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. Verb is always dependent on the subject. So singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. There are some exceptions. कुछ verbs ऐसे हैं जो कि singular subject के साथ भी वो plural ही रहते हैं. We will discuss that in the upcoming videos. लेकिन आज के लिए we will focus on this formula that singular subject will carry singular verb and plural subject, plural verb. And the verb must agree with its subject, number and person. अब कुछ इस पे एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं कि हाउ इट्स हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. यहाँ आपने देखा ही किसी एक लड़के की बात हो रही है, वो लेटर लिखता है, पत्र लिखता है. तो यहाँ आपने देखा ही इज द सब्जेक्ट एंड इट्स सिंगुलर एंड इट इज कैरिंग अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, दैट इज राइट्स. राइट्स इज सिंगुलर वर्ब. ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट्स इज सिंगुलर वर्ब. Then you can say actors perform on the stage. This is another example. Actors is plural here. So plural subject, and perform is the plural verb. So singular subject will have singular verb, singular subject, singular verb, plural subject will have plural verb. अगर हम यहाँ कहें
कि ही राइट अ लेटर, हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर रखा और हमने राइट यानी वर्ब को प्लूरल कर दिया, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक्टर्स परफॉर्म्स कर दूं मैं, इफ आई ऐड एस टू परफॉर्म, then actors performs is absolutely wrong, because actors is singular, is not a singular subject, it's plural subject, and performs is singular verb. So always keep that in mind. Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. What happens when we add s or es to a noun? For example, knife is a noun, it's a singular, and when we add s or es, that it becomes knives. So adding s or es to a noun, it becomes plural. Knife, knives, thief, thieves, boy, boys, apple, apples, banana, bananas. We are adding s and we are making it to plural for noun. But it's just opposite for verb. When we add s or es to a verb, it becomes singular. Noun में s और es हमने लगाया तो वो प्लूरल बन गया, उसका नंबर प्लूरल हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया. लेकिन वर्ब में जब हमने s और es लगाया तो वो प्लूरल से वो सिंगुलर हो गया. गो इज प्लूरल एंड गोज इज सिंगुलर. es लगा या किसी भी वर्ब में s लग गया या es लग गया तो वो सिंगुलर हो जाता है. लेकिन इट्स जस्ट द ऑपोजिट इन केस ऑफ नाउन. एस और es लगा नाउन में तो वो प्लूरल हो जाता है. बॉय, बॉयज. और नाउन का जस्ट ऑपोजिट है. राइट इज प्लूरल विदाउट एस ई एस, बट व्हेन वी ऐड एस ई एस, राइट्स इज सिंगुलर. सो we discussed today about subject verb agreement, and there are other things as well related to subject verb agreement, and there are some other rules we'll discuss in the upcoming videos. So thank you so much for your time, and just a request, if you haven't subscribed my channel, please do it and share it to your loved ones, to your friends. Thank you so much for your time. Bye-bye and have a great day.